Hi guys, this is your co-host Rubina, and I have with me my other co-host Samina Aftab, and you are listening to Call Me In. Yay! And this week we will be talking about what should we call that movie? Like a hot sensational topic for months. It was a sensational topic for months before it was released, like Jemimah Huh. Khan directed and everything. It's called What's Love Got to Do with It, and we have a lot of thoughts on it. I still don't know Rabia ki kya thoughts हैं. Rabia doesn't know mine. I think this is the first time we watched something and हमने कोई बात नहीं की उसके बारे में. So like I'm very excited to know what you think about it. So yeah. मुझे लगता है कि people were very excited for it क्योंकि obviously उसमें सजल कास्ट की उन्होंने और शेखर कपूर was directing it Yeah. और it was representing Pakistan or we have very less to none representation in English cinema, British या फिर Hollywood. So people were very excited. We were mostly represented as terrorists for the longest time. So people were very excited. लेकिन जब movie निकली है ना, तो a lot of people were offended by it. People had mixed opinions. मैं movie जब देख रही थी ना और मैं उसका end देख रही थी तो I understood क्योंकि people were लोगों को जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन उस मूवी में चाहिए थी ना वो उनको नहीं मिली लेकिन दैट आई रियली एंजॉयड दैट फिल्म अगर वो आप अंग्रेजी फिल्म खोज के देखोगे ना तो यू विल एंजॉय इट आई थिंक द एंडिंग वाज रियली गुड Okay, I have very different opinions. I hated the movie. मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं मुझे नहीं मजा आया इतनी बोरिंग मूवी थी मतलब I feel like it could have been a 1 hour long movie and completely वो बहुत अच्छी हो सकती थी ये इतना drag and I felt like it was trying to be a little too preachy like they tried too hard to be deep and the the script wasn't giving, the dialogues weren't giving, and I was like, मतलब बीच में अच्छा for me the first half of the movie was very like bland and I did not like it. I did not feel represented at all. Even as a story, even if I didn't look at it as like representation because जरूरी तो नहीं है हर movie representation हो, I still didn't like the story in itself. I was like, acha, there's this. But the second part of the movie I liked, I enjoyed. I liked the ending as well. I was like, okay, ठीक है, good enough. But at the same time, वही घिसी पिटी चीज थी कि brown guy forced to marry, but he likes the white girl, and the white girl makes him realize what love actually is. And it was so, I was like, oh, what the hell? But one thing I liked about it was that they didn't show Memuna ka character, Sajal Aly's character, to be like the vamp or like someone like not she had her own characters ke apne flaws the if anything she had more of a personality than any of the main leads of the show un sabko to bahut bland personalities thi not well written characters but Memuna ka character I felt like was better and it was played by Sajal really well as well like I think mujhe Sajal ko dekhkar hi maza aa raha tha यार आई थिंक इट कुड हैव बीन मोर फनी क्योंकि आई yeah वाज एक्सपेक्टिंग रोम कॉम और उसमें सिर्फ जो एक मुझे मुझे नहीं बीच में करेक्टर आया था जो रिश्ता गए था है ना उसका I love him more आई लव दैट मैच That's- वाज सो फनी उसके अलावा ना मुझे जोई की अम्मा जो कि एमा टॉमसन है हाँ उसका मुझे करेक्टर इतना फनी लगा मुझे कुछ कुछ जोक्स उसके बिल्कुल अच्छे नहीं लगे और मुझे और कौन फनी था शबाना आजमी का जो कैरेक्टर था मुझे उसका did नाम not भूल like it. Did not. I love Shabana Azmi, but I don't know what her character was. गया हाँ She could have done it better. तो मुझे 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 आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फन और मैं चाहती थी कि ज़्यादा मुझे लगा कि रोमांटिक कॉमेडी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट हाँ. टू डिलीवर अ डीप मैसेज अच्छा, I wasn't expecting a romantic comedy. मुझे पता था कि कुछ होगा, लेकिन I felt like they were trying to be deep, but they were not deep. So like even what they were trying to do, they did not deliver it. वो जो इस message देना चाह रहे थे, the message was too in the face, but not there at the same time. So it was like जो fake deep quotes होते हैं Facebook के ऊपर, कुछ dialogues थे वो इतने उस तरह के थे कि मुझे देख के हंसी आई थी मैं कही थी मतलब अगर ऐसे होता ना कोई उनको ironically बोल रहा होता तो I would have laughed, I would have maybe even agreed, but they were so dead serious about those analogies and everything and I was like what is going on ये लोग actually serious इस बारे में also
I don't know the actor's name, the main lead, the girl, the who's making the documentary. Zoe. uh, उसका नाम है लिली जेम्स. Okay, I did not like her acting. I didn't enjoy it. I don't know, like वो character flaw था, director का flaw था या actor का flaw था, but I didn't like it. I did not enjoy watching. और ऊपर से the main leads did not have any chemistry. उनमें कोई chemistry. They were not even trying to be in love. उनको था ही नहीं अपने एक दूसरे से में कोई interest. Also, I feel like the review aunties जिनकी मैंने 3 दिन पहले बेइज्जती की है क्योंकि अब इस वक्त मैं सबको बैठ के रोस्ट कर रही हूँ. But I did like a few things in the movie. Okay, I will mention the things that I like. Yeah, they did not had chemistry. I think Shazad and Sajal had chemistry, लेकिन वो इतनी explore नहीं हुई थी chemistry. I was waiting for their scene क्योंकि मुझे लग रहा था अच्छा उन्हें जो मूवी है ना उसको मार्केट उन्होंने इस तरीके से किया था कि वो ये बता रहे हैं कि वो अरेंज मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज अच्छी होती है. जमाइमा खान अपने इंटरव्यूज में भी बोल रही थी कि ओ मैं पाकिस्तान गई थी तो इतने लोगों की अरेंज मैरिज हुई थी, मैंने अपने दोस्तों की खुद अरेंज मैरिज की. तो मुझे लगा कि शायद वो दे आर शोइंग अरेंज मैरिज इन अ पॉजिटिव लाइट और उन्होंने मार्केट भी ऐसे की थी, लेकिन दे आर नॉट. That's what I'm saying. Like the message was so incomplete and so weird. Like, what are you trying to? Are you trying to paint arranged marriages in a bad way or a good way? Like, what is the message? We do not get what the message was because मतलब ठीक है थोड़ा उन्होंने शायद subtly ये बोलने की कोशिश की है कि arranged marriages suck, which okay yes they do, but at the same time they do work out for some people. Also I feel like the arranged marriage representation was not like good because the arranged marriages I have seen na unke andar the first 2 months aren't like this at all जिसमें awkwardness चल रही हो. The first 2 months are practically love bombing. ठीक है. वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं. It is so, like love marriages की जगह in arranged marriages there's more love bombing and there's more romance and more they're both sluts basically. साफ साफ नजर आ रहा होता है कि क्या चल रहा है. Everyone's horny and just yeah. So that so I was a little confused and I was laughing about it because that's not really how arranged marriages work. They talk for a month and they're like on to each other for the whole month. So and uske baad the problems start and everything. So I guess it's this tarah is वजह से था because both of them were in love with someone else. But at the same time मैंने हमने अरेंज मैरिजेस ऐसी देखी हुई हैं जिनके अंदर पीपल आर इन लव विद समवन एल्स. उनके अंदर यही हो रहा होता है कि ओ अल्लाह मियाँ से दुआ कर ली और बस गुड आई एम गुड एंड आई एम नाउ इन लव विद समवन एल्स एंड बाद के मसले बाद में देखे जाएंगे. तो आई डिडंट लाइक दैट. मुझे लगा कि वो एक फ्लॉ था. दे डिडंट प्रॉपरली did their research के किस तरह होती है अरेंज मैरिजेस. जमाइमा ने ये भी बोला कि दिस मूवी इज इंस्पायर्ड बाय माय एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, और जैसे मैंने पाकिस्तानी लोग देखे हैं a lot of people hate मेमूना's कैरेक्टर, और क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस या पाकिस्तानी कैरेक्टर वो दिखा रहे हैं वो एक ऐसी लड़की दिखा रहे हैं who drinks, who parties और वो सब. I love their character. I really find it funny जब वो अपनी बहनी में दुपट्टा उतार के जा रही होती है म्यूजिक और वो कहते हैं "Please, अब्बा." she's blonde. वो इतनी परफेक्ट चीज थी ना क्योंकि हर लड़की हाईलाइट्स करा देती है अपनी शादी पे. Please, I loved. They did not show any chemistry between Maimuna and Kazim, and like sorry मैं अपना thought process भूल रही हूँ इस वक्त. एक second. हाँ just because when Kazim goes to that mutual date thing जहाँ पे it's literally a group date पता नहीं क्या हो रहा होता है. It's like a matrimonial date type of thing जहाँ सब एक दूसरे से बात करेंगे. जो it was so funny. I want to go on one just for the vibes. मैं देखना चाहती हूँ वहाँ क्या होता है. But हाँ, so like there Kazim when he comes back and Kazim keeps on insisting that he wants to marry someone जिसके साथ उसका spark हो. Like it's an assisted marriage for him, right? He just wants his parents to introduce him to someone. So like he finds someone in the community, but he wants the spark as well. But we do not see the spark anywhere with Maimuna. Like there is no spark whatsoever. उनकी कोई ऐसी बात नहीं दिखाते. And I feel like they could have shown more scenes जिनके अंदर उनकी बात हो रही होती और वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पर आ रहे होते rather than adding very weird and awkward scenes जिस तरह जोई की फ्रेंड का वो एक her friend's husband was cheating on her. Like वो उसको इतना elongate करना शायद ज़रूरी नहीं था. Which okay I understand कि वो उनको
बच्चियों को like that they thought it was an integral part of the story because she was reading them fairy tales and like वो fairy tales की analogies बना के उनको बताई थी, which honestly the analogies were not good for me. I thought it was written by क्योंकि huh? अब वो स्नो वाइट पे डिबेट भी हो रही है ना आजकल, जो नई स्नो वाइट बन रही है उसमें कह रहे हैं शी इज नॉट गोना फॉल इन लव विद, और एवरीवन इज लाइक कि व्हाई कैन नॉट अ गर्ल फॉल इन लव विद अ मैन, क्यों वो, हाँ, और इवन बार्बी का भी यही मकसद था कि यू आर नॉट लेस वर्थ इट जस्ट बिकॉज यू आर exactly. नाइस. The analogies felt like they were written by a 16-year-old who had just discovered what feminism is, and they think falling in love with is falling in love is for weak people, and like I don't need no man, and I would rather be. So exactly what Zoe's mother says, ke hyper independence is like a Western disease, which it is, and like we all have been through it. I understand, but I feel like the analogies were not good. They could have been बेहतर लिखी जा सकती थी. It didn't seem like something a 32-year-old would say, you know, even to young children. Okay. Okay, what else? What else? Acha, I really liked. I feel like I should say this. I really liked जो शादी वाले scenes थे. They were like a little bit funny, and I liked how उसको पाकिस्तान में आके काजिम के character को एक cultural shock मिलता है because he realizes के his like these Muslims in a Muslim country are way more modern and like liberal and what would you open minded than we are, and we live like in the West. Which is true. Like we have cousins who come over and they're like उनको बहुत बड़ा शौक लगता है, वो कहते हैं कि this is not how we live. हम उनको पाकिस्तान पोर्ट्रे भी इस तरह नहीं किया जाता, उनको दिखाया जाता है कि ओ भाई ये वो. And I understand कि काफी लोग offend हुए, but it is the reality. पाकिस्तान में we do have people like this. Like I'm not going to say anything, but like इस तरह होता है शादियों पे, especially we do enjoy a lot. We do dances and you know everything is going on, साथ साथ चल रहा होता है. But शादी के costumes and the dances were so bad. Like I'm sorry, the द dances were गर्ल, good. जो गर्ल्स उसने दिखाती है जो डांस कर रही थी, इतना एविडेंट है कि वो लड़कियां ब्रिटिश हैं. मतलब आप कैसे हम Exactly. कि वो पाकिस्तान, वो मैं भी literally मतलब नजर आ रहा है ब्रिटिश लड़की है. मैं लिटरली यही कहने वाली थी. दे डिड नॉट लुक पाकिस्तानी लाइक देसी एट ऑल. कहीं से एक तो उनका मेकअप से साफ पता लग रहा था, एक ऊपर से मतलब देयर इज दिस लुक टू अ ब्रिटिश पाकिस्तानी. ऑल ऑफ देम हैड इट, एंड द clothes, they were so bad. A Pakistani wouldn't be caught dead wearing the lehengas they were wearing. I would not. मैं मर जाऊँ वो पहनने से पहले. They were so obviously British. I'm sorry, British Pakistanis, but the clothes ain't it. खैर. तो जब वो yeah, but रिक्शा I सीन हो रहा होता है ना और वो रो के जा रही होती है और वो शबाना आजमी का कैरेक्टर कहता है ब्राइड्स डू क्रैश, फनी लगा था. हाँ, and I love. अच्छा मुझे एक और बात फनी लगी कि I feel like मेहंदियों पे कोई ऐसे चला नहीं जाता. हाँ, पेरेंट्स वहीं पर होते हैं और आप पेरेंट्स के सामने ही कर रहे होते हो सब कुछ. So, but I liked how the cousins, the brother, उसका भाई had her back. कि वो हाँ, वो जब जो जोई की माँ बोलने लगती है like ना ना ये नहीं बताना कि she dances. अच्छा I didn't like how जो उसका भाई और उसकी वाइफ होती है और हाउ दे मेट, तो जब वो बात करते हैं ना कि दे वर डूइंग दिस हैरी पॉटर वाली थिंग जिसमें वो that was so funny. I know. मुझे उनका उन दोनों का कपल looked cute. एक तो हाँ, they weren't arranged marriage. I think उन लोगों की like अच्छा there's this thing about this thing I wanted to talk about. I don't know who the script writer of the movie is, but जमाइमा they है. talk. हाँ, so it seemed like it कि हाँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा white person perspective था. It like you said, it wasn't good representation in the sense that you could tell this entire movie is written by a white person's lens. ठीक है? Anything, even the characters that I liked, like you said, the brother and his wife, they were like fun characters, but unki personalities were also so shallow. Like how they met, it was just like, oh, Harry Potter, and oh, we were on Match, and we were on Minder, and like it was so shallow. It was like their interview was so shallow. I didn't like it. Plus the parents interview, I feel like I guess what she wanted to portray was that they were trying too hard to show that they're a happy family through arranged marriage. But at the same time, arranged marriages are very toxic, and our parents like
like they have been through a lot, but at the same time they do have this weird trauma bond kind of situation where they will never accept के कुछ गलत भी हुआ था कभी. तो इन उस पूरे प्रोसेस के थ्रू उन्होंने अगर 30-35 साल साथ गुजारे हैं, देयर वर ऑब्वियसली टाइम्स they could have talked about rather than just saying कि ओ मैं स्टेज पे बैठा था तो लाइट चली गई तो मैंने बस उसके कान में कह दिया कि कोई बात नहीं. मतलब no desi parent would ever say that. To do with it. अच्छा उसके अंदर ना what I found really funny was के end पर ना Zoe की documentary they put it on a pause for this very reason कि there's like a white person perspective and like white person lens के through बनी हुई है movie. So like you know what that is, but at the same time you're making a movie which is so out of touch with reality and you're releasing it as well. It was funny. Okay. और अच्छा मैंने क्या बात करनी थी, हाँ जमाइमा विद दैट मूवी सेट के दिस मूवी इज लाइक अ लव लेटर टू पाकिस्तान, इज माय लव लेटर टू पाकिस्तान. How? मुझे वही कौन क्या लव लेटर, पाकिस्तानी लोग मोस्टली ऑफेंड हुए हैं जिन्होंने ये मूवी देखी. मुझे लगता है कि इट वाज जमाइमा's पर्सनल ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान जाके कि people are pretending. लेकिन अगेन मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने सारा अंदरून दिखाया है, मैं भी सोच रही हूँ कि यार लोग अंदरून में अब लिटरली नहीं रहते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ी सी लाहौर दिखाना है तो वही लाहौर का स्पेशल एरिया है, तो शायद आप वही दिखा रहे हो, लेकिन वो सारा लंदन में शूट हुआ है. आई डोंट नो हाउ दे गॉट And now दैट. the Anarkali Bazaar looked so real. I'm not even kidding. I've been to Anarkali a million times and I literally college के पास है. और मेरी माँ को ये की, मैं मामा को कह रही हूँ, मामा वो नहीं आए पाकिस्तान. नहीं, वो आए. हाँ वो नहीं. और फिर I don't know how they, एक बादशाही मस्जिद हवेली का टॉप का शॉट भी है. I think they did पाकिस्तान. मुझे नहीं पता. तो खैर वो जो घर था ना वो पता लग रहा था कि यूरोपियन में है ना. वो नहीं, वो घर, मेरी बात सुनो, वो घर कहाँ था मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं रहता है ऐसे लाहौर में, स्पेशली बिकॉज मेमूना की फैमिली वाज लाइक प्रीटी वेल ऑफ. So like even if they were living in a Havelis are also very like well renovated अंदर से and everything. उनकी दीवारों के ऊपर अकबर के ज़माने के निशान लगे हुए थे. मैं मजाक ही नहीं कर रही. मुझे लग रहा था बादशाही मस्जिद के अंदर जाकर उन्होंने शूटिंग की है. और मैं देख के परेशान थी कि ऐसा कौन सा पाकिस्तान है. एंड आई थिंक आई रियली लाइक्ड द फैक्ट हाउ everyone in the family in that household, they had their flaws. Like they weren't good people. They were not good people. The husband, जो काजिम का अब्बा होता है, एक तो I loved how he comes to Pakistan and the white woman is like, oh my god, ये लोग बुर्का कैसे पहनते हैं, इनको सांस नहीं, like isn't it suffocating? And he's like, and they're better than the women who only have their eyes covered and nothing else because they're wearing sunglasses. And that was such a desi uncle thing to do. मतलब जो भी अंकल्स बाहर से आते हैं ना पाकिस्तान, और वो ऐसे आके रोमांटिसाइज करने लग जाते हैं हमारी औरतों की उसको कि ओ माय गॉड सब निकाब करती हैं, इट्स द इनसाइड दैट काउंट्स, सबको ये होना चाहिए, हम ब्यूटी के ऊपर नहीं जाते. और वही अंकल सबसे पहले ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते हैं. बट दैट वाज सो ट्रू. प्लस देन द दादी, Heike hated the Dadi's character, but at the same time, she was very close with her grandchildren. Like, बड़ी important एक वो थी उनकी जिंदगी में, which is like how most grandparents relationships are. You kind of hate them, but at the same time you're very close with them. So it's like, you know, एक ideological difference भी था. And then जब Kazim gets, अच्छा, I didn't understand why she did that. I feel like that was like a very bad choice to make. That Kazim gets disappointed when he sees that Maimuna isn't like, you know, the perfect little girl he thought she was. जब वो डांस करने जाती है and वो बाहर चला जाता है, वो लिटरली अपनी मेहंदी से उठ के बाहर चला जाता है. That was such a dick move. Like, dude, of course she has a personality. Of course she's not just a fucking lawyer. और वो बैठकर आपके लिए रोटियां तो पकाने नहीं वाली. And like उस time पे he says not exactly what my parents were expecting. But at the same time he marries her, he's fine with it. Like, okay, of course that's good for him. But वो scene, वो choice मुझे अच्छी नहीं लगी कि he sees कि यहाँ पे ये हो रहा है and he just leaves the मेहंदी. मतलब, and he's like, trust me, no one will notice. That was so unrealistic. Everyone notices when a दूल्हा leaves. दामादों की बहन जो वो जब ऊपर छत पे खड़े होते हैं और वो सिगरेट पी रहा होता है और वो कहती है she likes to party, तो exactly, why are you fucking judging? तो जज कर लिया तुम लोग. हाँ, मतलब मुझे उस सीन की पॉइंट समझ में ही नहीं आया कि why were we judging Maimuna? Maimuna was the life of the party. I loved her.
I loved her character. It's like I see के like she's a law student. She's like she listens to her parents कि अच्छा उन्होंने कहा शादी कर लो लंदन में एक लड़का है उससे शादी कर लो उसने कर ली. So like she's like she has that good girl thing, but at the same time she is pretending. Like most girls in Pakistan are. We do like to enjoy things and like we like to dance and we want to smile on our मेहंदी. उसकी माँ उसको निकलते हुए जाके कहेगी कि don't smile too much. Like that's not who we are, you know. So I liked that about Maimuna's character. Ke, like I said, I really like it. Wasn't a flawed character. It was flawed in the sense that she realizes what she wants after she watches Zoe's movie. Acha, I want to talk about that as well. Jo end wale scenes the na, but at the same time, matlab, I love a realistic character, and Maimuna was the most realistic character out of them all. She wasn't preachy. She was just living her life, like very realistic. I like that. True. और it was like कि वो बहुत ही मशहूर थी बहू चाहते हैं जो ये करे वो करे और इवन काजिन जो है वो भी somehow इस चीज पे करता है कि वो बहुत अच्छी हो बहुत ये हो और फिर एंड पे आके वो उनके जब उस पे नहीं होती आई डोंट लाइक कि वो फिर कहते हैं आई डोंट केयर लेकिन वो शायद इसलिए कहते हैं because he did not love her and it did not matter to him कि वो ऐसी है ऐसी नहीं है और इवन जब वो अपने टेक्स्ट भी उसको दिखाती है तो वो बहुत चिल होता है उसका बिल्कुल कोई हार्ट ब्रेक कुछ भी नहीं होता वो कहता है अच्छा वो भी Literally, फाइन like they're fine with it because he himself is in love with someone else now. or he's not expecting it. I like the line when you watch a Netflix movie. Netflix? No, when you watch a whole series with me for the rest of मतलब वो ऐसे करके कुछ कहते हैं और वो कहते हैं really take it slowly. वहाँ पे मुझे उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगी थी और उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तानीज were also not expecting a kiss लेकिन they kissed. The kiss was so awkward, Rabia. It was so badly directed. I don't know who directed that kiss. It was realistic, I will give them that, but like not a good scene. Acha, about the Acha, yeah. Acha, so हाँ about chemistry वाली thing ना फिर उसके बाद हम लोग लास्ट सीन पर आते हैं पूरे लाहौर के अंदर when they're like trying to see कि bro I feel like the airplane shot could have been like they could have shot it so well because उसके अंदर इतना potential था ना the putting your head on the airplane and talking to someone that's so cute ठीक है I see the romantic vibes there इकलौता सीन ना जहाँ जो उनका जब वो अनारकली बाजार होते हैं और शी गेट्स अ नेकलेस फ्रॉम देयर एंड वो उसको पहनाता है फर्स्ट ऑफ ऑल भरे बाजार में उसको नेकलेस पहना रहा है मैं वो 15,000 का नेकलेस था उसने एक बार बोला 10 का कर दो उसने कहा ठीक है ऐसे इतनी जल्दी कोई भी नहीं मानता मैं बताती हूँ क्यों क्योंकि वो 15,000 का नेकलेस था ही नहीं ठीक है वो बंदा उनको उनका एक्सेंट सुनकर उनको उल्लू बना रहा था ठीक है उसने कहा चलो ये बेवकूफ लोग हैं 10,000 भी देने को तैयार है मैं ले लेता हूँ 10,000 बट खैर अच्छा वो एक तो हाँ वहां पे केमिस्ट्री थी जहाँ पे ही इज लाइक उसको नेकलेस पहना रहा होता है अच्छा एंड वाला सीन ना व्हेन दे टॉक अबाउट अरेंज्ड मैरिजेस अच्छा जब शी इज आल्सो काइंड ऑफ इन लाइक एन अरेंज्ड relationship जो उसकी माँ finds a vet for him and she decides to give him a chance and वो बच्चों को नहीं थे उसके जो दोस्त के बच्चे होते हैं उनको स्टोरी भी सुना रही होती है कि good enough is good enough and like I don't you know basically implying that she doesn't love him but like stability is what she wants at this point which we've all been there and like I understood that I liked that too but I still couldn't understand the message, you know, कि एक तरफ आप बोल रहे हो मुझे लगता है कभी कभी ना when you do find someone who's stable for you and like you do end up walking into love जिस तरह the woman said like I'm not saying कि हाँ arranged marriages are great and I'm not saying कि boring होना चाहिए of course you need a spark you know but sparks do die शुरू शुरू के अंदर होता है फिर उसके बाद if the person is not you know willing to work it out with you and तो अजीब सी चीजें हो रही हैं and the person himself or herself they're not good people and they don't have goals and आपकी motivation similar नहीं है it doesn't work out so like if you find someone like that you can always build a spark I feel like you know ज़रूरी नहीं है आप बच्चे करो or anything but मुझे लगता है कि friendship is more important in a relationship and yeah but मुझे लगता है कि the female lead Zoe was very confused क्योंकि एक point पे it feels like she is desperate to find someone जिसके साथ वो
जो उसे प्यार कर सके और उसके साथ वो जिंदगी गुजार सके और ये सब कुछ. Maybe that was because she was seeing the person she was in love with having an arranged marriage और उसके अंदर थोड़ा सा हो रहा था और उसने कहा कि चलो मैं भी ये कर लेती हूँ. लेकिन at some point they showed us कि she's like I don't need anyone, मुझे नहीं किसी की चीज़ की ज़रूरत. और एंड पे जो उसका और उसकी अम्मी का बात होती है उसमें भी वो ये कहती है कि it's not like I see you as a half person, it's like कि you are so much pushed into that agenda कि तुम लोगों को अपने पास ही नहीं आने देती. Which I write what she said, लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि does she want someone or does she not, or if she's just jealous कि उसका जो love of the life है वो किसी और से शादी कर. But then what it was giving, it had very Joe March vibe to it. I feel like she was a little bit influenced by Joe March. The whole Joe March monologue where you're like, women have so much to them. And I feel like we've said this before, but I'm lonely. I'm so lonely. So like I understood that. Okay, it is definitely, and like her mother also says ke it's about community, even if you're not finding someone like a romantic partner or something. Her mother says that she found them in the Khans, like she wanted a found family for herself. So she found that in the Khans, but she wants her to find something like that because she's not even letting she doesn't even have a friends group. ठीक है, उसका मैंने कभी उसको दोस्तों के साथ नहीं देखा. Also another thing, उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी. She had no crew. कोई क्रू नहीं था उसके पास, वो एक ही कैमरे पर लगी हुई थी. That's not how documentaries are made. I was so confused. It's like, not, I don't know how that woman was an award winning documentary maker. It's like, girl, you have no crew, you have nothing. एक कैमरे के साथ लगी हुई. Okay, so final thoughts about what's love got to do with it. अच्छा, for me, I do agree. मैंने मूवी पूरी जो है ना वो इस पर्सपेक्टिव से देखी थी कि this is Jemimah Khan's point of view. She observed that from Pakistani people in Pakistan. और मैंने हर किसी को जो मुझसे पूछ भी रहे थे ना कि कैसी मूवी कैसी है, मैंने कहा इट्स नॉट द पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन यू गाइज आर थिंक इट इज, और यू गाइज हैव टू वॉच इट अंग्रेजी मूवी समझ के ही. Final thoughts मेरे वही हैं कि I did not enjoy it as much, but I was also expecting to not enjoy it. I loved Sajal Ali का character. That was it. I think Kazim का character में कोई इतनी depth नहीं थी. I think Zoe ka character was trying too hard to be deep, but was not deep enough. The second half of the movie was good. And what else? I think the vet wala character also. I think the characters were not that well written and bade surface level characters the, and it could have been better. Or agar ये movie छोटी होती तो शायद ज़्यादा मज़ा आता. That's it for me. अच्छा, तो we also really wanted to talk about जो the comments of Rubina, Ashraf, Nadia Khan and Marina Khan Marina. on Fairy Tale, because it's quite a talk of the town of आजकल. तो I just really wanted to talk about it because we disagree. Of course, we disagree. I will go to war for my favorite drama. But yeah, what were your thoughts? मुझे लगा था it was अच्छा. एक चीज होती है ना कि if we are talking about a show or something, we are nobodies. ठीक है, nobody हाँ. cares हम क्या बोलते हैं. Also, we are Yeah, fangirling. like अगर हम बात करते हैं कि if like I didn't like the movie तो मैं बोल रही थी मुझे ऐसा लग रहा है मैं रुबीना अशरफ हूँ तो, but at the same time I feel like even I was more respectful than she. Like she is so old, उनके अंदर थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए to like talk about newcomers in like a very in थोड़ा सा encouraging way. Like you can say you didn't like it, you can say you didn't agree with the premise of the show. First of all, उन्होंने पहला सीजन देखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है शो है किस बारे में. एक हाँ. सबसे बड़ी बात, it's a romantic comedy, it's not supposed to be taken that seriously. Like I said about that movie was trying to be deep. Fairy Tale is not trying to be deep, it's not trying to be preachy, it's not trying to be anything. हाँ. हाँ. It's just a romantic comedy for us, for the girlies, and it was not for them. हाँ. If you don't like it, you're not the target audience. Move on. No need to be rude. No हाँ, need to be mean. You're so. अच्छा, you start because मेरा rant शुरू हो जाएगा फिर. I don't want to start. या फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि उन तीनों का रिव्यू आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि
मुझे लगता है कि क्योंकि वो समथिंग हॉट आया और इट बिकेम पॉपुलर एंड पीपल स्टार्टेड एंजॉयिंग सबके रिव्यूज, लोगों के रिव्यूज सुनना, तो एवरीवन स्टार्टेड रिव्यूइंग। और चलो वो अम्मा वाला मुझे समझ आता है, समथिंग हॉट समझ आता है क्योंकि दे आर जर्नलिस्ट और वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मुझे इन तीनों की बैठ के टेलीविजन शो पे बैठ के शोज डिस्कस करने की समझ नहीं आई। ठीक है, आपकी रोजी लगी हुई, आप पैसे कमा लो, right? Because you're part of हाँ। the industry, you're part of that very industry, so it just it's not it seems like you're not coming from a good place और कि आप अपने colleagues को बैठ के वो कर और रहे हो दूसरा ये कि journalist का, yeah, you're right. मुझे नहीं लगता कि फेरी टेल जैसे शो को क्रिटिकली रिव्यू करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने काबली पुलाव किया, दैट शो हैव सम डेप्थ्स एंड लेयर्स टू इट, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हैं जिनमें फ्लॉज हैं और पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी हैं, और उसमें मैसेजिंग है। फेरी टेल में ऐसी कोई मैसेजिंग नहीं है, इट्स फॉर प्योर एंटरटेनमेंट। और मैंने अपनी ट्वीट में भी बोला था, इट्स लाइक यू आर रिव्यूइंग बुलबुले, क्योंकि हम दोनों भी हर हफ्ते डिस्कस कर रहे थे कि फेरी टेल के बारे में बोलना है, तो यू आर लाइक यार उसमें क्या है, इट्स जस्ट अ फील गुड शो, तो उसमें हम क्या बात करेंगे। दूसरा ये कि एवरीवन वाज लाइक दे डिड नॉट हैव द सेम आउटरीच फॉर तेरे बिन, जो कि एक ऐसा शो है जो आप कह रहे हो कि आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट भी करे, और जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जिनमें फ्लॉज भी हैं, लेयर्स भी हैं उन कैरेक्टर्स के, और इट्स अ पुअरली लिटन शो, लेकिन उसके बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे। Cause I don't know, I think they're just pissed कि our show is doing well। और मुझे इन सीनियर एक्टर्स की समझ नहीं आती, they are so वो अब इतना उनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना कि वो बार बार बोली जा रही, अनकही के टाइम ये हुआ था, अनकही के टाइम वो हुआ था, धूप किनारे जो ये, धूप किनारे बात वो। है लीव दैट, मूव move ऑन, on. स्टॉप टॉकिंग अबाउट। मैंने देखा but also the thing that was really sad about what she said regarding Ankahi was the fairy tale fandom, they respect Ankahi and they respected Marina Khan, and like they like the show, और वो लोग काफी ज्यादा parallels निकालते हैं from Ankahi and from that era के shows, because this show is like somewhat the characters are somewhat similar. Rubina Ashraf was like right about that part कि like इतना serious नहीं ले रहे, so like that was something that really. Acha, also, I don't know if you watched the Fuchsia interview of Sara Majid, the writer who wrote Fairy Tale. अच्छा, उन्होंने ना रमज़ान के एंड पर उन्होंने फूशिया जो राबिया जो है उनको इंटरव्यू दिया था, राइट? एंड शी टॉक्स, मैंने भी बहुत रिसेंटली देखा बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन शी लाइक रिकमेंडेड मी टू वॉच आमना का जो समथिंग हॉट वाला है ना, उसका आमना इंटरव्यूड व्हाट्स हर नेम, समथिंग मखतूम, तेरे बिन की राइटर जो है, अच्छा, आमना ने उनका इंटरव्यू किया था, और शी वाज लाइक तुम्हें वो देखना चाहिए, उसने फुल चुमान, आमना ने इतनी मीठी मीठी उसको बोली हैं और ये वो ले लिया आमना ने तो उसकी, और ये वो। अच्छा, अब द थिंग इज आई डोंट रियली वॉच इतने रिव्यूज, इन यू माइट नो दिस, मैं इतना सीरियस लेती भी नहीं हूँ उन रिव्यूज़ को, तो मैं जब देखना शुरू किया ना, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग to hate it, but I hated that interview so much because Amna was definitely like was sensible baat keh rahi thi, but the writer was so hell bent on like what do you like she wanted to defend her character so badly कि उसने जो पेड़ मार दी ना, तो वो तो उसने मारनी थी, वो तो वो तो उसका रिएक्शन हाँ, था, तो उसने तो ऐसे, और मैं कह रही हूँ गर्ल स्टॉप, मेरे से वो इंटरव्यू देखा ही नहीं गया, एंड आई स्टॉप वॉचिंग इट, आई रिमेंबर्ड कि सारा मजीद ने एक इंटरव्यू दिया था एंड आई वांटेड टू वॉच दैट, मैंने उसको बंद कर दिया और मैंने सारा जी का इंटरव्यू देखना शुरू कर दिया, एंड दैट इंटरव्यू वाज सो मच बेटर, लाइक थ्रू आउट द इंटरव्यू she is saying ke I have learned from old PTV dramas, and like I watch those dramas and I learned from them and I love those dramas, and like she talks about them as well, and and she's constantly saying कि I am learning, आप कोई मुझे criticize करेगा तो like मैं defend नहीं करूँगी, मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो सीख रही हूँ अभी, और हो सकता है काफ़ी गलत चीज़ें हों और ये वो, so I really liked her as a person, but मुझे वो चीज़ इतनी बुरी लगी कि she talks so highly of those people, and same with oh my god, शहर। Seher. Same with Seher. She's like, unki bichari, she was with Marina Khan on the round table thing, and like, she obviously looks up to हाँ, those people, and they're saying things like that about them. And the script, Nadia Khan, तो I'm sorry, Nadia Khan was so ridiculous. उन दोनों को तो मैं थोड़ा seriously ले भी लूँ. Nadia Khan वो के comments इतने ridiculous थे. Did you hear when she said खुशहाल का drama is better क्योंकि at least वो उसमें रो तो रहे हैं. ये हमें नहीं रोते हुए देखना किसी को. बस हो गया हमारी. हम सफर के ड्रामे से देख रहे रो रो. एक पहली बात तो ये, नादिया खान इज नॉट एन एक्टर, तो आई डोंट थिंक कि शी हैव इनफ नॉलेज टू critical be critical about a script or about a show।
दूसरा ये है कि यार शी सेड कि हमारे नौजवानों को रोमांस देखने का बहुत शौक है, तो हमें क्यों ना शौक हो, क्यों नहीं देखना एग्जैक्टली। चाहिए? और क्या बर्बादी कर देगा, क्या बर्बादी तेरे दिन नहीं कर सकता जो इन लोगों का फेवरेट शो था। मुझे लगता है कि इन लोगों ने बहुत मतलब दे लव दैट रियली? शो। और क्या बर्बादी फेरियल करा, आई डोंट नो व्हाई दे वर सो पिस्ड। हाँ, सबने कहा कि दे डिड नॉट हैड द सेम आउटरेज फॉर तेरे I बिन, did उन्होंने not कुछ भी know नहीं कहा। that. Bro, I don't know what's wrong. Oh, person, Nadia Khan is a ridiculous woman. I'm sorry, but वो जब वो कहती है कि ओ स्क्रिप्ट राइटिंग इतना आसान काम है, मुझे तो लगता है मैं गलत करियर में आ गई हूँ, ऐसे खाना बनाते बनाते मैं सीन लिख लूँ और ये वो। I was so mad because, ma'am, no offense, but आप your ticket to fame was your morning show. And like morning show करना कौन सा मुश्किल काम है जो आपको हाँ script writer समझ ले? Like I understand the scripts these days are not good and writing अच्छी नहीं है, I agree with that. But you're projecting it on the wrong person, on the one person जो कि अच्छे characters लिख रहा है, one person who is understanding the target audience, so like what the audience wants, how to attract the audience. So Nadia Khan was ridiculous. So जब romance वाली बात है ना, ऑल्सो एवरी शो कैन नॉट बी अ सोशल इशू exactly, या जिसमें प्रॉब्लम हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, वो कहती फन किए जा रहे हैं क्योंकि शो है ही exactly. फन का। फन मुझे मुझे समझ नहीं, यू आर नॉट द टारगेट ऑडियंस ऑफ इट, पीपल आर क्लियरली एंजॉयिंग इट, इफ यू आर नॉट तो दैट्स यू। Also, Marina Khan was still like, सबसे funny बात ये रिस्पेक्टफुल। है, सबसे ज़्यादा credible जो थी ना उन सब में मरीना खान थी, and she was the most respectful out of them. बाकी दोनों, हाँ, I don't know, talking out of their asses for no fucking अच्छा, reason at और all. व्हाट्स फनी अबाउट रुबीना अशरफ इज दैट कि उसने उसने खुद एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था जिसमें उसने अपनी बेटी को सपोर्टिंग रोल में लिया था, और उसकी बेटी की इंतहाई बुरी एक्टिंग थी, I know. बहुत ही बुरी I एक्टिंग थी। know. और वो उसको बार बार जस्टिफाई करी थी, बल्कि वो उस टाइम सब न्यूज़ चैनल्स नहीं, ये जो भी पोर्टल्स वगैरह मीडिया पोर्टल्स है, उनको कॉल आउट भी करी थी कि आप मेरी बेटी की एक्टिंग की क्यों कर रहे हैं। और वो बैठ के किसी और की एक्टिंग को बैठ के जज करिए जब कि आपकी अपनी बेटी ने इतनी बुरी एक्टिंग की थी। Just मुझे सबसे ज़्यादा disrespectful was Rubina Ashraf for I don't know what reason. It seemed like she was salty about something. I don't know what she was salty हाँ, about. हाँ, एग्ज़ैक्टली। ऊपर से मुझे इतना गुस्सा आया when they said कि oh the only person जो कि अच्छा लग रहा है शो में वो है हमजा सुहेल. Now I love Hamza Suhail, okay? ठीक है, everyone knows I हाँ, love him. But that was giving pick me energy. ठीक है कि हाँ हाँ, I just like guy. I am so attracted to the young new heartthrob. I am going to give him 7 out of 10. But the woman, she's a 4. But हाँ. हाँ। So I did. यार मुझे लगता है कि दैट्स द प्रॉब्लम कि जब भी कोई शो हिट होता है ना, उसमें हमेशा मेल कैरेक्टर को ज़्यादा रिकग्निशन हाँ. मिलती है। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो फीमेल है, तो वो मेल को देखती हैं, तो दे आर अट्रैक्टेड बाय देम या जो भी है, लेकिन यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम द फीमेल एक्ट्रेस, और हमेशा ऐसे ही होता है। और याद है जब हमारी रमज़ान में भी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा था कि आई नो कि हमजा सुहेल वुड गेट गुड अपॉर्चुनिटीज आगे, एंड ही इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ ए लिस्ट एक्टर्स नाउ। लेकिन आई होप कि शहर को भी वैसी ही अपॉर्चुनिटीज मिलें, क्योंकि दे आर नॉट फेयर। Also, acha, this someone else also mentioned it कि Mahira Khan was so right about this. Ke the moment you start हाँ, getting fame, people will try to pull you down, and I that was so true हाँ, for Seher, and I too hope that she gets better opportunities now because she said this before. Ke oh, I haven't like made some career choices she has made that she isn't really proud of. Like I understand because obviously you हम्म, need dramas, you want to be successful, और आप जितने dramas करोगे आपको उतनी आप स्क्रीन टाइम आएगा उस दिन लोग देखेंगे आपको एंड शी गॉट फेरी टेल शी गॉट हाँ, दैट वाज a very good thing for her, and like I'm very happy and I hope she gets better scripts now because that is so हम्म, important for an actor, and Seher is an amazing actor in my opinion. Also, the since we're talking about Mahira Khan wali baat, someone also said this is the reason of Mahira Khan's stardom. I think this is true for both Mahira and Fawad, that they never talk shit about anyone. हम्म, They do हाँ, interviews, and there have been so many controversies about like a lot of actors जो आते हैं like किसी के बारे में बात कर देना or something. Mahira and Fawad are so हम्म, respectful and so low key. And Mahira ने तो वैसे ही like she's like the mother hen. उसने हर किसी को she's like taken everyone under her wing, and she's so, I love हाँ, that about her. Anyone who talks about her is like, yeah, वो तो हमें ये देती है. I remember हानिया आमिर का एक दफा इंटरव्यू आया था and she said कि Mahira tells her what to wear.
when and like she lets her borrow her clothes and stuff. So like I really like that about Mahira, and like that is the true grace as like a famous person or a star should have. So yeah, I think hum log बहुत support मुझे इंसान है. लगता है कि जो जो सीनियर एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं, और मुझे लगता है कि माहिरा खान इज़ अ गुड इंस्पिरेशन फॉर द यंगर एक्टर्स, क्योंकि मैंने आई हैव सीन हर appreciating every single female act. I have seen her appreciating Sajal, Yumna, Hania, Ikra. वो सबको इतना appreciate करती है, and you know कि she's not jealous or something. लेकिन मुझे लगता है कि with the older actors they are really jealous of माहिरा खान, और फिर वो बार बार उसको drag down करते हैं कि इसकी acting अच्छी नहीं है, इसकी acting अच्छी नहीं है. I think she's an amazing personality and she's a superstar. मुझे लगता है कि अगर कोई पाकिस्तान को internationally represent कर सकता है वो माहिरा खान है, और अगर उसको वो opportunities मिलती हैं, I think she deserves it. Bro, that was so funny when Nadia Khan said के रोमांस हमारी अच्छा she was like इन लोगों को रोमांस बहुत पसंद है, इन लोगों को पता, इनको लग पता जाएगा इनकी जो पता नहीं, हमें अभी से लग पता गया हमें. It's like सुनो ठीक है, इनको पता लगेगा कि शादी भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, फिर ये कहेंगे बस यही था. और मुझे इतनी हंसी आती है इस बात पे because no one who watches fairy tale is aspiring to get married. Nobody, literally. All of us are like, लड़के से भागना है ये वो. We're so into the one good fictional male character in Pakistan. We are so obsessed with the man because he's a fictional It's character. more like an escape कि Exactly. हम it's an escape from real life problems. It's not like कि हम देख के इंस्पायर करें. उनको लगता है कि हर शो जो टीवी पे चल रहा है ना, वो ऑडियंस वैसी जिंदगी चाहती है, क्योंकि उनके टाइम पे ऐसे शोज बने हैं जो कि ज़्यादा रियलिटी बेस्ड थे और इंस्पिरेशनल थे, तो उनको भूल के कि ऐसे शोज भी लग सकते हैं. They are for pure entertainment and nothing But else. also, Rabia, what's wrong with wanting what is in that show? It's very healthy love. Love is, it's healthy. Love is healthy. हाँ. Romance is also like, okay, I understand you have to be realistic It's such about a it. good show for बंदे कि वो देखें और Exactly, you उनको पता learn लगे from कि it. ऐसा बंदा होना चाहिए आपको आपको. आपको कुछ तो लाइक पॉजिटिव किस्म की रिप्रेजेंटेशन मिल रही है. यू गेट टू लर्न समथिंग. आई एम सॉरी, हर कोई ड्रामे देख के चांटे देख देख के घर पे अपने घर जाके भी चांटे मारे. आई एम सॉरी, आई डोंट, नोबडी लाइक्स दैट एनीमोर. हम मैं माफी चाहिए, हाँ. हमें थोड़ी सी पॉजिटिव वो चाहिए. हाँ, मेरा वो हो रहा है. ऑल्सो आई थिंक हम ये घंटे तक जाने वाले एपिसोड पे, तो वी शुड जस्ट एंड इट हियर. Guys, thank you so much for listening to it. We hope you guys liked it and enjoyed it. And let us know, please let us know what you guys want us to talk about आगे, because हमें नहीं पता. हाँ, I will struggle every week Every fucking कि हम I क्या feel like करें. next week we're going to watch Mission Impossible. I really want to do Mission Impossible. I'm sorry, मुझे बहुत मजा आएगा. अच्छा, वो ऐसा तो नहीं है कि आपको जैसे मार्वल सीरीज है, आपको पता होनी चाहिए कि पिछले सीजन्स में क्या हुआ पिछले We'll talk मूवीज में. about that later. But for now, if you guys want us to अच्छा watch अच्छा. something else, let us know. Also, yeah, that's it. Thank you. Bye. Call me in.